Hey guys, in this video I'm going to talk about the story how I fell in love with the reading books और reading books मेरी hobby कैसे बन गई और reading books उसने मेरी life कैसे change गई. But before that, life changing books and everything, let's talk about how I fell in reading with the reading books. So I won't say कि ये मेरे control में था. It all because of the family. So if any parents are watching this video, then make sure you use this technique और आप ये सारी techniques अपने फैमिली में यूज करो ताकि आपके बच्चे ताकि आपके जो भी घर के आसपास हो, दे विल स्टार्ट रीडिंग द बुक्स बिकॉज अल्टीमेटली रीडिंग इज समथिंग वर्थ रीडिंग. और एक बार आपको पढ़ना आ गया देन यू कैन डू अ लॉट ऑफ बेटर थिंग्स. एंड सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाना या रीड करना सिखाना बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर लॉन्ग टर्म जर्नी. अल्टीमेटली बच्चों के लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगा. So most of my credit goes to my family, the how I started the reading or how I started reading culture. It's because my family already had the reading culture. बचपन से बहुत सारे लोग पढ़ते थे. बचपन से they used to take me to the libraries. कुछ पढ़ना समझना कुछ नहीं आता था. I just go and सारी ऐसी बड़ी बड़ी किताबें देखता था क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक शेल्फ है, यहाँ पे इतनी सारी किताबें है. आई यूज टू जस्ट थिंक अबाउट कि यार इतनी बुक्स कौन पढ़ता था. मतलब बचपन में कुछ वैसे समझ में तो नहीं आता था. यू नेवर नो कि व्हाट इज देयर. बट ऑल माई थैंक्स टू द ग्रैंड पेरेंट्स कि जिन्होंने मुझे एक ट्रिक और एक मेथड से जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया और द वे दे इम्प्लीमेंटेड रीडिंग हैबिट इन मी. सो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट एंड दिस स्टोरी इज डेफिनेटली हेल्पफुल इफ यू आर अ पेरेंट और इफ यू आर गोइंग टू बी द पेरेंट एंड इफ यू हैव any of your parents and they want their children to read the books, then make sure you use this technique. So technique is really simple. वॉट लाइक बचपन में हम कौन सी किताबें पढ़ते थे? पंचतंत्र, अकबर बिरबल, चिंटू, ऐसी छोटी मोटी किताबें पढ़ते थे जिसमें ज़्यादा कुछ छोटी छोटी स्टोरीज होती थी और वो सारी स्टोरीज कुछ ना कुछ सिखा के जाती थी. सिखाने का बाद में बट वो स्टोरी समझ में आना ही बहुत बड़ी चीज़ होती थी. तो स्टोरी व्हाट हैपन्स लाइक व्हेन एवर बिफोर यू गो टू द स्लेप. सो स्टोरी टीचिंग का एक सीजन होता है और उस टाइम पे व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज. सो बेसिकली वो स्टोरी स्टार्ट करते थे. दे यूज्ड टू हाइप एवरीथिंग कि यार इसमें ऐसे होने वाला है, चिंटू ने ऐसे किया, अकबर बिरबल ने ऐसे किया, बिरबल इज दिस मच स्मार्ट वगैरह वगैरह. वो ऐसे स्टोरीज बताते थे कि यार ऐसे ऐसे स्टोरी हो रही है, नाउ दिस हैपेंड, इसके बाद ये हो रहा है, ये हो रहा है. सो ऐसे वो स्टोरी बताते थे स्टार्ट से लेके ऑलमोस्ट 80% 90% वो स्टोरी बताते थे. एंड देर इज ऑलवेज वन क्लाइमैक्स इन द ईच एंड एवरी स्टोरी. वो इवन दो वो छोटी छोटी स्टोरी होती थी बट उसमें एक क्लाइमैक्स होता था कि जो रियली इंपॉर्टेंट होता है कि उस क्लाइमैक्स पे सब कुछ पता चल जाता है कि ये स्टोरी का मीनिंग क्या है या स्टोरी का इंपॉर्टेंस क्या है. सो वो जब क्लाइमैक्स आता था दे यूज्ड टू स्टॉप. like they never told me what is the climax of that book or what is the climax of that story. और वो मुझे बोलते थे कि now go to sleep, if you want to know the ending of the story then wake up tomorrow and read this story. And that's how I got shocked. Like obviously you wanted to know कि एंड में क्या हुआ और ऐसे ही तुम सोचते सोचते तो सो जाते हो एंड नेक्स्ट डे तुम वेकअप जब नेक्स्ट डे आता है देन यू हैव टू रीड दिस बुक बिकॉज grandparents are not going to tell you what is happenning in the ending. So you have to read that story from the start till the end. And that's how I started understanding stories. That's how I started reading the books. And that is like, I will say that is one of the best way or the tricky way that my grandparents did. So I became the reader or I started understanding more about the reading purpose or why reading is important. So that's the reason how my reading journey started. And after that, after some years, obviously, then they introduced me to some of the छोटे छोटे books. Like then there is a story about after पंचतंत्र, अकबर बिरबल, then छोटी छोटी ऐसी अपने अपने लैंग्वेज में बुक आती थी. सो आई यूज्ड टू रीड इन द मराठी लैंग्वेज. सो मराठी लैंग्वेज की बुक्स आती थी बिकॉज इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी एंड देर वॉज नॉट अ लॉट ऑफ स्कोप अवेलेबल फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज. बट आई स्टार्टेड रीडिंग विद मराठी लैंग्वेज बाय द सुधा मारती बुक्स, वाइज एंड अदरवाइज. ऐसी छोटी मोटी जो हिंदी में या सॉरी मराठी में ट्रांसलेशन थी वो सारी बुक्स में पढ़ना शुरू कर दिया था बिकॉज दोज आर बुक्स अवेलेबल एंड दोज आर ईजी टू गेट फ्रॉम द library. So that's how this whole reading concept started in my family, or that's how this whole reading culture started building in my family. And that is something really really important to understand. Now after when I entered into the 11th standard, 12th standard, now I started to understand, okay, there are so many books available and we don't have that much time and I have to figure out कि कौन सी चीज़ें मुझे पढ़नी है. And the next steps I did is finding my interest. So in 11th 12th standard I used to read a lot of romantic books. Like दुर्जोय दत्ता की मैंने बुक पढ़ी थी, रविंद्र सिंह की बुक पढ़ी थी, बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी थी which are related to romance section or which is related into the romance category because उस टाइम में वो इंटरेस्ट था because of the hormonal change, because you get to interact with opposite gender and that is common. Like
that is a very common between the young generation to read the romance book. And obviously my tends to have the more interest toward those kind of books because I was in 11th standard and having so much fun in life and everything. So I started with my interest book. So if you wanted to become a reader, then find out your current interest. Whatever your current interest, try to figure out कि उस कैटेगरी में बुक्स कौन सी और जो भी बुक्स उस कैटेगरी में, try to read those books and you will ultimately get the hang of it and you will start reading more and more books. So that's how I started my reading journey, or that's how I started understanding more about the reading culture. I entered into this booktube community or the bookstagram community. Then I realized I don't have to focus on all the best books available, because I used to think about, I always had this key about the less focus on the hyped books, because all the hyped books are not great always. There are so many hyped books, but all the hyped books are never great or never help you a lot. So never focus on the hyped books unless and until that is your favorite author or something is meaningful in there. Do not even touch the hyped books, because hyped books वैसे भी hyped होती है because of the marketing purpose, the way do they marketing, the way everything is done. So because of that marketing purpose, that books become famous, और books वैसे भी famous हो जाती है because of that marketing. So you don't have to focus book which are national bestseller, Amazon first bestseller or New York Times bestseller. सारी books basically bestseller होती है. It's all depends on you whether you want to take that or not. So it's all ultimately defined by you कि तुम्हें उस पर focus करना है कि नहीं करना है. If you read hyped books and if that doesn't help you, then it obviously not a good thing. So better है कि do not focus on the hyped book. I never focused on the hyped book. I would rather read whichever into my category, whichever in the TBR list. I used to read those kind of books. That's how basically I fell in the love with the reading, and I still enjoy reading a lot of books, whether it is a fiction, non-fiction. बहुत सारी ऐसी books पढ़ी हैं, and all of those are amazing books. And if you want to know more about those books, then make sure you join the newsletter where I share a lot of such stuffs, and that will definitely help you to short summary about those books. That will definitely help you to pick up your next best book. So that's more about this video, how I fell in love with the reading. If you're looking for my life-changing books, then check out this video where I shared a lot of life-changing books. That's almost 2022 books that is in the list. That will definitely gonna help you. And if you're looking for the behind the scenes, then check out this channel where I shared a lot of vlogs, behind the scenes, a lot of stuff. And that's all for the today's video. See you in the next one.